Okay, so already we are analyzing the thermodynamic cycles, and we have seen the several types of rankine cycles or their modifications. मतलब हम लोग जो रैंकाइन साइकिल देख चुके हैं, बेसिक रैंकाइन साइकिल था, फिर उसके बाद एक्सर्जी एनालिसिस किया उसका, फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, and then we have gone to the modification of this rankine cycle by increasing the mean temperature of heat addition. So इसका जो concept था वो मैंने last day बोल चुका हूँ, what is the concept of mean temperature of heat addition. So last दिन इसका एक एग्जांपल भी दिया था, मतलब कैसे mean temperature of heat को addition को increase किया जाता है. So one modification of Rankine cycle I have shown in the last day, that was the reheat cycle. So from today I will start the another modification of the Rankine cycle, or rather to increase the mean temperature of heat addition, and it is regeneration. So very much interesting thing, and little bit complicated than the previous ones. Okay, so this was the reheat cycle. Now I will go to the regeneration cycle. So regeneration cycle पे होता क्या है? So this is the flow diagram has been drawn for regeneration cycle. इसको देख के घबरा मत जाना, क्योंकि ये साइकिल बहुत ज्यादा होता है. इधर 2 regeneration है, इससे भी ज्यादा होता है. So don't be panic by seeing this picture. I will explain this picture. Okay, this image. So regeneration में क्या होता है? Regeneration में होता है because we have to increase the temperature of the heat addition, or the mean temperature of the heat addition, because we know that there is a direct relation of temperature of heat addition to the efficiency. मतलब अगर mean temperature of heat addition increase होता है तो साइकिल का efficiency increase होता है. Okay. So how to increase? So one modification and one way to increase the mean effective temperature of heat addition has already been shown, that is the reheat cycle. ठीक है, और उस बेसिस पे एक असाइनमेंट भी मैंने दिया था reheat cycle के बेसिस पे. नाउ आई विल स्टार्ट द रीजनरेशन. सो रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन है ये हम लोगों को जो हीट इनपुट है वो घटाने का कोशिश है. जो हीट इनपुट है वो हाउ इट कुड बी मिनिमाइज्ड. ओके, सो फॉर दिस केस व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो टरबाइन है, टरबाइन से स्टीम को बाहर निकल के लाते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है, फिर उसको मिक्स करते हैं हम लोग को जो फाइनल आउटपुट प्रोडक्ट है और फीड वाटर हीटर से. फिर उसके बाद हम उसको सेंड करते हैं बॉयलर पे. सो कैसे होता है ये मेरा बात समझ में नहीं आया. सो व्हेन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यूजिंग दिस डायग्राम, सो लेट अस अंडरस्टैंड. सो दिस इज द बॉयलर. सो फर्स्ट केस ऑफ द बॉयलर. सो बॉयलर से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम्स goes to the inlet of the turbine. Now in the turbine, the high pressure and high temperature steam expands. Because of this expansion क्या होता है, उस टेम्परेचर का उस स्टीम का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, as well as the pressure also decreases. मतलब प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है. सो हम इस बीच में क्या करते हैं कि बीच में हम एक पोर्शन से वो स्टीम बाहर निकल के लाते हैं. ठीक है, सो जो स्टीम बाहर निकल के लाते हैं, फिर बाकी का जो स्टीम है उसको अलाउ करते हैं एक्सपेंड करने के लिए. मतलब इधर से एक पोर्शन ऑफ स्टीम को बाहर निकल के लेके आया, फिर बाकी का जो स्टीम था, जो रिमेनिंग स्टीम था, उसको हम इधर अलाउ किया एक्सपेंड करने के लिए. फिर से क्या किया, फिर से एक पोर्शन से जो स्टीम है उसको बाहर निकल के लेके आया. ठीक है, फिर बाकी का जो पोर्शन है उसको अलाउ किया एक्सपेंड करने के लिए. मतलब इधर से हम दो काटआउट है, दो काटआउट से हम स्टीम को बाहर निकल के लेके आते हैं. क्यों बाहर निकल के लेके आते हैं ये मैं बाद में बोलूंगा. whenever I will calculate, I will show you the exergy analysis of this regeneration cycle. because ये अगर बाहर निकल के लेके आया तो ये थोड़ा एफिशिएंसी हम लोगों को इंक्रीज करेगा और जो हीट एडिशन है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा. कैसे होगा ये आई विल कम लेटर, बिकॉज इसका जो पावर आउटपुट है, बट जब पावर आउटपुट है ये थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा. और विद रेस्पेक्ट टू द पावर आउटपुट जो हीट एडिशन का डिक्रीज है वो बहुत ज्यादा है. सो विद रेस्पेक्ट टू द डिक्रीमेंट ऑफ द पावर आउटपुट as well as the decrement of the heat input, the net result of this, the efficiency increases.
मतलब दोनों ही डिक्रीज होगा, बट द नेट रिजल्ट होगा क्या कि जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगा। सो अगर मान लो स्टीम को बाहर निकल के लेके आया तो उसका वर्क आउटपुट घटेगा ही, क्योंकि हम पूरा स्टीम को अलाउ नहीं कर रहे हैं दैट इट विल एक्सपैंड। ओके, सो इधर दो कट आउट है, वन कट आउट एंड दो कट आउट, दो कट आउट से हम स्टीम को बाहर निकल के लेके आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें ये बाद में बोलता हूँ। ठीक है, सो इट विल कम लेटर ऑन। फिर जो बाकी का जो स्ट्रीम है उसको एक्सपेंड करने के लिए अलाउ करता हूँ, अलाउ कर दिया। जो बाकी का जो रिमेनिंग स्ट्रीम था दो कटआउट के बाद वो बाकी का जो पोर्शन है टर्बाइन में वो उधर एक्सपेंड हो गया। ओके, सो आफ्टर द एक्सपेंशन it leaves the turbine and enters into the condenser। कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में होता है क्या कि कंडेंसर में जो स्टीम और जो वाटर का मिक्सचर है, तो उसको क्या कहते हैं, जो क्वालिटी जो लास्ट दिन तक हम लोग पढ़ चुके हैं क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है, हम वो पूरा मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वाटर को क्या करते हैं, पूरा वाटर में कन्वर्ट करते हैं बाय टेकिंग आउट ऑफ हीट व्हिच इज रादर वेस्टेड। जो हीट है वो वेस्ट हो जाएगा। So in the condenser we take out the heat, that is termed as the Q2। So that's similar process as the simple Rankine cycle। Then it is sent to the pump। So pump में क्या होता है, pump में इसको send कर दिया। Then after sending to the pump, what happens? Then it is not directly fed to the boiler। Directly इसको boiler में feed नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? Instead of directly feeding to the boiler, इसको क्या जाता है कि इसमें इसको एक हीटर में भेजा जाता है। फीड वाटर हीटर हो गया और डिएरेटर कोई भी हो गया, तो इसको हीटर में भेजा जाता है। हीटर में क्या होता है, जो स्टीम हम लोग एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं इसको डायरेक्ट मिला दो और इनडायरेक्ट भी मिला दो, उसको इसके साथ कांटेक्ट में लेके आना है। डायरेक्ट हो और इनडायरेक्ट हो, इसको मिक्सिंग भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। कोई भी हम लोग यूज करते हैं। आइदर वी कैन यूज डायरेक्ट कांटेक्ट व्हिच इज नोन एज डिएरेटर, और वी कैन यूज द we can use your some heat transferring devices just like your heat exchanger, so that the heat can be transferred to the water which would be fed to the boiler। मतलब हम लोगों को बॉयलर में जो वाटर घुसेगा उसका टेम्परेचर पहले से ही हम इंक्रीज कर देते हैं। कैसे? by taking out the steam which has been already been heated in the boiler। मतलब बॉयलर में जो हीट हो चुका है ऑलरेडी, वो स्टीम को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसी स्टीम का जो हीट है हम उसको यूज कर रहे हैं जो फीड वाटर होगा उसको हीट करने के लिए। मतलब वाइस वर्सा वी कैन से that the heat addition in the feed water heater or heat addition in the water which will rather convert into the steam in the boiler is little bit less than the previous one। okay, so इधर दो कट आउट है, वन है हीटर 2, वन है हीटर 1। मतलब सेकंड कट आउट से जो स्टीम हम लोग निकल के ला चुके हैं उसको हम मिक्स करेंगे ये फीड वाटर से। देन जो सेकंड का कट आउट था, जो कट आउट था हम उसको मिक्स करेंगे इससे। सो इधर एक फीड वाटर का हीट इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर उसको एक पंप से फीड करेंगे नेक्स्ट हीटर पे। जो नेक्स्ट हीटर में क्या करेंगे, जो पहले का जो स्टीम था, जो पहले कट आउट का स्टीम था जिसका टेम्परेचर ज्यादा था, जिसका प्रेशर ज्यादा था, उसको हम मिक्स करेंगे इसके साथ। और वी कैन यूज सम हीट एक्सचेंजर सो दैट हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टीम टू द वाटर और द फीड वाटर हीटर। सो ये इधर वाटर हीट हो गया। मतलब हम लोग डायरेक्ट कंडेंसर से जो वाटर भेज रहे थे बॉयलर पे, अब डायरेक्ट नहीं भेज रहे हैं, उसको हीट ऐड करके भेज रहे हैं। ऑलरेडी उसको हीट दे के भेज रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर उसको पहले से हीट दे के भेज रहे हैं, मतलब उसका जो डिजायर्ड क्वालिटीज है, उसका जो डिजायर्ड टेम्परेचर और डिजायर्ड जो प्रॉपर्टीज है उसको रीच करने में हमको कम हीट लगेगा देन द प्रीवियस वन। सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ रीजेनरेशन। मतलब रीजेनरेशन में हम पहले ही फीड वाटर को हीट करके भेजेंगे सो दैट द हीट रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग द स्टीम इज लेस देन द प्रीवियस वन। सो ये है कॉन्सेप्ट हीट रीजेनरेशन का। सो इधर दो रीजेनरेशन हैज बीन शोन, मतलब दो कट आउट है, मतलब ये साइकिल है with 2 feed water heaters और 2 regeneration। ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, it may be many।
So it is, if it is more, then the cycle efficiency is more. ये एक प्रॉब्लम करूंगा, फिर उसके बाद दिखाऊंगा कैसे रीजनरेशन पे तुम्हारा हीट efficiency इंक्रीज हो रहा है. So this is the exergy analysis of your regeneration cycle with two feed water heaters. Okay, so let us see. So ये है तुम्हारा TS diagram. This is your TS diagram and no superheat is given. There is no superheat. So in this diagram we have shown that there is no superheat. मतलब steam जो water है वो saturated steam में convert होने के बाद ही steam तुम्हारा turbine पे expand हो रहा है. Okay, so one is the inlet of the turbine. Look at over there. One is the inlet of the turbine. Okay, then it straightly falls to the 4, matlab condenser. Look at over there, this is the 4 condenser. Okay, so 1 to 4 is the process in the turbine where we get the required power output. Okay, so in this process, the process is reversible isentropic process, a reversible additive process, or isentropic process. That means the entropy remains constant for an ideal cycle or the theoretical cycle. ओके, सो इस बीच में 1 to 2 के फॉल के बीच में हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग 2 बार स्टीम को बाहर निकल के ला चुके हैं. एक बार m1 kg स्टीम बाहर निकल के लेके आया और दूसरी बार m2 kg, बिकॉज वी हैव 2 फेड वाटर. इफ इट वाज 3 देन इट विल बी अगेन 3, मतलब तीन हो जाता, फिर ये हो जाता है m3. सो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम स्टीम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उतना ज्यादा वर्क आउटपुट लेस हो जाएगा. ओके, सो हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग फर्स्ट कटआउट में m1 के जो स्टीम बाहर निकल के लेके ला चुके और दूसरा कटआउट में m2 के स्टीम को बाहर निकल के लेके आए. ओके, सो हम लोग अगर देखेंगे कि कंडेंसर में कितना हीट रिजेक्ट होगा, सो हम देखेंगे कि वो है इतना अमाउंट, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इनटू दिस. देखो पहले m kg स्टीम ऑलरेडी टरबाइन से निकल के निकल गया, फिर दूसरे पार्ट कटआउट में m2 निकल गया, रिमेनिंग कितना हुआ 1 माइनस m1 माइनस m2, और ये तुम्हारा फेज चेंज करेगा इन द कंडेंसर. ओके, okay, I'm back online again. Okay, there is a problem in internet connection. Okay, okay. So let us continue with this. So we have seen that how the mass of the steam is acting in different phases. Okay, so different phases of that is first cutout, second cutout, and the condenser. And we have seen how much mass of the steam or water is flowing through the 3 stages: feed water 1, feed water 2, or the condenser. Okay, so कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में ये हीट रिजेक्ट हो जाता है. 4 to 5 इज योर कंडेंसर. ओके, फिर कंडेंसर के बाद ये जाता है फर्स्ट पंप पे, ये जाता है सेकंड पंप पे, ये जाता है थर्ड पंप पे. देन फाइनली आवर हीटिंग इज डन फ्रॉम 10 to 1, from 10 to 1. So if regeneration was not provided, then the heating should be done from 6 to 1. So you can see how much heat we have saved. That means this much amount of heat we have saved. मतलब ये इतना हीट नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग यूज कर चुके हैं रीजनरेशन. ओके, so this will affect in our efficiency. Okay, so now we will understand what is the q1. q1 matlab how much heat has been added. So it is h1 minus h10, so it will be h1 minus h10. Okay, then q2 will be how much heat has been rejected. That means this much amount of mass multiplied by h4 minus h5.
अब टर्बाइन वर्क कितना हुआ, दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. So turbine has three work output. One is W1, then is W2, that is W2, and this is W3. So WT will be this plus this, मतलब ये तीनों W का समेशन हो जाएगा तुम्हारा WT टर्बाइन वर्क. कैसे? क्योंकि फर्स्ट फेज जो है 1 to 2 इधर 1 kg of steam is expanding. For the next phase here 1 minus m1 kg steam is expanding. Why? Because already we have taken out 1 m kg of steam. m kg of steam हम लोग फर्स्ट कार्टून में निकल के लेके आए, तो कितना रिमेनिंग होगा 1 minus m1, and it will expand in the second phase of the turbine. Then in the last phase it will expand up to 1 minus m1 minus m2. Okay, the similar concept, because second कार्टून में हम लोग m2 सेकंड फेज में हम लोग M2 स्ट्रीम बाहर निकल के लेके आए, तो कितना रिमेनिंग होगा, प्रीवियसली जो एक्सपेंड हो रहा था दैट वाज 1 minus m1, एंड M2 निकलने के बाद it will be 1 minus m1 minus m2. So these are the three work done, that we will get in the turbine. तो इसका वैल्यू कितना होगा? So for the case 1 to 2 it will be 1 multiplied by H1 minus H2. Okay, so this one. Now for the second phase it will be 1 minus m1 kg multiplied by H2 minus H3. It will be like this. Then for the last one it will be 1 minus m1 minus m2 multiplied by H3 minus H4. Okay, so this is the your turbine work. Okay, similarly we will get the pump work. How? So first one is this one, WP1, WP2, WP3. Okay, so here how much water is there? It is 1 minus m1 minus m2. So the work done by the pump it will be 1 minus m1 minus m2 multiplied by H6 minus H5. Then for the next case it will be 1 minus m1 H8 minus H7. Then for the last case it will be H10 minus H9 multiplied by 1, क्योंकि फाइनल जो पंप है वो यूज कर रहा है 1 kg of steam. Okay, so this is the 3 pump work and we have added these 3. Okay. Now we have to find out what is the value of M1 and what is the value of M2. So as this is the feed water heater, so for the first case it will be, we will have to make the steady flow energy equations. For the first case we will use the steady flow energy equation. So here it will be M1 into H2 is equal to 1 minus M1 into H8 is equal to H9. मतलब जितना हीट इधर से जाएगा उतना ही हीट इधर से ऐड होगा. So M1 will come like this. M1 is equal to H9 minus H8 by H2 minus H8. So next heater में क्या होगा? It will be M2 into H3 multiplied by 1 minus M1 M2 into H6. So we'll apply this over here. And we'll get the equations. Okay. So this is important to solve the problems. Okay. Now what is the mean effective temperature of heat addition? So first हम देखेंगे with regeneration. So with regeneration पे कितना होगा heat addition? So it will be the H1 minus H10 by S1 minus S10. So it is the mean effective temperature of heat addition with regeneration, that I was talking. And without regeneration the heat addition will be started from here. मतलब यही है बॉयलर की इनपुट, 6 है बॉयलर के इनपुट विदाउट रिजेनरेशन, and it will reach to 1. Okay, so without regeneration the mean effective temperature of heat addition it will be H1 minus H6 by S1 minus S6 by S1 minus S6. So it will be the mean effective temperature of regeneration, and we will get that this is
This mean this TM1 with regeneration is greater than TM1 without regeneration, and we'll see by solving one problem. Okay, so this is the concept of regeneration. Now I will move on to for solving the problem. Okay, now I'll move on to the solving one problem. So try to understand this problem, because this problem is a little bit critical one. Okay, so let us understand. First problem देख लेते हैं. What is the problem? So you can read from the problem. You can read it that in a single heater regenerative cycle, in a single heater regenerative cycle, the steam enters the turbine at 30 bar 400 degrees centigrade, and the exhaust pressure is 0.10 bar. The feed water heater is the direct contact type in which operates at 5 bar. So at 5 bar, find A, the efficiency and the steam rate of the cycle, and B, the increase in the mean temperature of heat addition, the efficiency and the steam rate as compared to the Rankine cycle without regeneration. मतलब regeneration नहीं होगा. So neglect the pump work. So from the problem, it is quite evident that two twisters are there. One is the feed water heater. This feed water heater is direct contact type. I was mentioning when I was explaining the feed water heater in the regenerative. I've given you a short brief of the feed water. The feed water heater is two types. One is direct contact type and another is indirect contact type. Indirect contact type मतलब जो heat exchange reduce करेगा, और direct contact type मतलब direct contact में आ जाएगा. Okay, so this type of direct contact type of feed water heater is used in this problem. Okay. Next, what we have to do? Next, we have to make a comparison. Between the cycle with regeneration and the cycle without regeneration. I think it will be helpful for better understanding of this regeneration. Okay, so let us understand. Okay. So first, what we will do, we will draw the TS diagram. Each and every case, whenever we will solve the problem on regarding the Rankine cycle, it will be based on the TS diagram. So this is the TS diagram we have seen, and these salient points are unknown. So we don't know where to place. So we have drawn the diagram arbitrarily. This point 2 may be inside, it may be outside. So we have to put a logic test so that we can understand where the point 2 is. So we have taken the point arbitrarily. Okay, so as here it has been shown that here it has been told that one single regenerative has been taken. मतलब 1 kg of steam हम बाहर निकल के लेके आए. One regeneration is there. Okay, so this is the TS diagram. Now we will move on to the solving of this problem. Okay, so how to solve this problem? So what are the data given? So the data given is P1 is equal to 30 bar. T1 is 400 degrees centigrade. So P1 is 30 bar. T1 is 400 degrees centigrade. Okay, so this data is given. P1 is 30 bar. T1 is 400 degrees centigrade. P3 is 0.10 bar and P2 is 5 bar. Okay, so from the steam table, we'll straightly get the values at 30 bar and 400 degrees centigrade because this is superheated. So H1 will be 3232 kilojoule per kg and H1 will be 6.932 kilojoule per kg. Now next step is to find out the conditions of 5 bar from the steam table. So in this case, we will use the saturated steam table first initially, because we will see what is the saturation properties of the steam at 5 bar. So the saturation property of steam bar is SG will be S2G. मतलब इधर का जो SG होगा, SG it will be 6.821. Okay, and S6 is 1.8607. Why I have taken entropy? Because entropy plays a vital role to solve this kind of problem, because from 1 to 2 this process is isentropic process. That means what will be S1, what will be S1, it will be S2 and it will be S3.
Now from the saturation property we are seeing that the Sg मतलब जो इधर का वैल्यू है वो है 6.821, वो है 6.821। मतलब इधर से हमें एक लॉजिक समझ में आ गया कि जो H2 का वैल्यू होगा, वो जो H2 का वैल्यू है वो Hg से ज्यादा है, मतलब the point 2 is in the superheated region. So you have to understand this. The point 2 is in the superheated region. Okay. So once we have got that the point is in the superheated region, now we will use the superheated steam table. Okay. Now superheated steam table में कौन सा हम properties put करेंगे? हम properties put करेंगे 1 H2 as 6.9232 and P as 5 bar. So using these two properties, we will get that the superheated values of the steam is 172 degrees centigrade. Because the time is limited, so I'll go on fast. Now using this point, salient point, we will find out the H2. The H2 value is given. Similarly, we will find out the H6. So H2 and H6, we will get it out from the steam table. Now, using the steam table at 0.10 bar, we will get H3, H3, this point, Hg, Sg, so at this point Hg, Sg will get at this point. Similarly, we will get the H4, S4. Okay. Now we will use the same thing, the same concept, whatever we have used in the Rankine cycle, the same formula we will use over here to find out the quality. What is the formula? This is the formula. S3 is equal to Sf multiplied by X into Sg minus Sf. So all the data are given like this. Okay, data already given है, data और अगर given नहीं है, so हम लोग steam table से निकल के लेके आए, and putting all this value we will get the X as like this 0.836. Now similarly you will use the same formula to find out H3. H3 is equal to H4 multiplied plus X into Hg minus H4. So putting all this value, H3 will come like this. Okay. Now we have got all the values at the salient points. What is the values? That is H1, H2, H3, H4. Now we have not find out H5 and H7. Why? Because it has been given that you have to neglect the pump work. मतलब जो H5 होगा वही H4 होगा, जो H7 होगा वही H6 होगा. Okay, so we have got all the values at the salient points, all the enthalpy values. So मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर रैंकाइन साइकिल का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, so always you should find out the enthalpies at each and every salient points. Now in my hand I have all the values. I have all the values at the salient points. Now I just put it on the formula. Okay, now we have to find out the m. So for the m, we will use this formula. So m into H2 minus H6 is equal to m into H2 minus H6 is equal to 1 minus m H6 minus H5. So सबका वैल्यू दिया हुआ है, H2, H6, H5, H सबका वैल्यू is given or we have got it from the steam table or using some calculation. Now from putting all the values we will get m. What is the value of m? So m will come 0.230 kg. Now after getting the m, we have to find out Wt. So Wt will be divided into two portions. Wt will be divided into two portions. It will be, this one will be W1 and this will be W2. So W1 is equal to 1 multiplied by H1 minus H2, 1 multiplied by H1 minus H2, and then W2 will be 1 minus M multiplied by H2 minus H3. Okay, so we have all the values. There is H1, H2, M, H2, H3. So if we put all these values, we will get Wt as 917.71 kilojoules per kg. Okay. Now, similarly, what is Q1? It is, if you see the diagram, it is H1 minus H7. H1 minus H7 because we have done the regeneration. So it will not be H1 minus H5. So we will get Q1 because we have the value of H1 and H7. So we will get the value of Q1. It is 2591.77. So what will be the eta cycle? So if we neglect the pump work, so it will come Wt by Q1. So it will come 0.354 or 35.4%. Okay. So ये हो गया तुम्हारा efficiency of the cycle using the regeneration cycle. Now we'll find out what is the
TM1 मतलब mean effective temperature of heat addition with regeneration and without regeneration. So with regeneration का जो formula है, it will be H1 minus H7 by S1 minus S7. S1 minus S7. So it will come like this because we have all the value. H1 का value 3232, H7 का value is given. So S1 S7 का value है सब given है. So we will get the value as 241.95 degrees centigrade. And without regeneration, it will be between the 0.1 and 0.5. So it is H1 minus H5 by S1 minus S5. So if we put all the values of H1, H5 and S1, S5, we will get the result like this, 221.13 degrees centigrade. Okay, so look at over there. With regeneration, our value has increased. Mean effective temperature is increased. How much? By 21.81 degrees centigrade. So it is quite clear. You can see that using the regeneration, we can increase the mean effective temperature of heat addition. Now, next portions. We will find out the steam rate. Steam rate with regeneration or without regeneration. Now look at over there. Now steam rate with regeneration, it will come 3600 by WT with regeneration. So with regeneration, we have got WT as 917.71. So it will come 3.923 kg per kilowatt hour. Okay, मतलब 1 kilowatt के लिए 3.93 kg steam चाहिए. Now without regeneration, what will be the turbine work? It will be simply H1 minus H3. Okay, so it will come like this. You can see it is more than this. You can see it is more than this because WT without regeneration is more. But I have told that net result will be the net increment of the efficiency will be more. Okay, let us come to the next part. I will tell you, and you will be able to understand from this. Okay, so what will be the steam rate? So it will be steam rate will be 3600 by WT without regeneration. So it will come 3.4601 kg per kilowatt hour. So what is the increment in the steam rate? So it will increment in the steam rate will be 0.463 kg per kilowatt hour. Now let us move on to the what will be the efficiency without regeneration. So efficiency without regeneration will be this the H1 minus H3 by H1 minus H5. So H1 minus H3 by H1 minus H4. What is H4? H5. H5 is same as H4. Okay. So without regeneration, it will come H1 minus H3 by H1 minus H4. So it will come like this, 0.3422 or 34.22%. So net increment in the efficiency will be 0.354 minus 0.3422 or will come this. 1.18% efficiency increasing. It means a lot for any rankine cycle or any power producing cycle. ये कहाँ से मिला 0.354 because already we have calculated over here. Look at over here. The efficiency is 35.4% or 0.354. मतलब without regeneration. Using the regeneration, we are seeing that our efficiency is increasing. So one regeneration has been used in this problem, and you can see 1.18% of efficiency has been increased. Okay, so we can see if we use the regeneration, our efficiency increases. Okay, so with this, the Rankine cycle completed. On our next day, I will start from the Otto cycle and diesel cycles. Okay, so if you have any question, then you can ask me right now. I have no questions. Okay, any question that you can ask me, okay? Okay, you unmute yourself and ask me. खुद को unmute करो और पूछ सकते हो. तो अगर कोई question नहीं है तो मीटिंग में end करो इधर. Okay. Thank you, friend. Okay, so let us see tomorrow. Okay, sir. Thank you. Thank you.